अस्सलामुअलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ख़वातीन और हज़रात। एक बार के साथ मुद्दस और साइम हाजिर हैं। अम, जैसा कि आप जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए जो हमारा एक जर्नी था वर्ल्ड कप और जो ड्रीम थी वो फुलफिल नहीं हो सकी। बट दिस इज लाइफ, दिस इज पार्ट ऑफ व्हाट क्रिकेट इज अबाउट, द अप्स एंड डाउन्स। तो इस एपिसोड के अंदर जो हमारा एजेंडा है, इसमें पहले तो हम एक क्विकली विल गिव यू आवर एनालिसिस, अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ व्हाट वेंट रॉन्ग। क्या रीजंस थी हमारी परफॉर्मेंस की, या क्या रीजन थी कि हम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके। सेकेंडली, जिस तरह की आपको न्यूज़ मोस्ट लाइकली मिली होगी कि बाबर आजम ने स्टेप डाउन, तो हम उसको रिव्यू करेंगे। बाबर आजम के अबाउट 3 to 4 years ही बीन अ कैप्टन। सो क्या पॉजिटिव्स रही हैं, क्या शॉर्ट कमिंग रही हैं बाबर आजम की कैप्टनसी era में। Thirdly, we're going to talk about the new captains, Shaheen for the white ball cricket and Shan Masood for test cricket. और फाइनली संडे को वर्ल्ड कप फाइनल होने लगा है, इंडिया द होस्ट नेशन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो इस फाइनल को हम कैसे देखते हैं, दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट कैसे स्टैक अप करती हैं। सो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बारे में। ऑब्वियसली बहुत कुछ कहा जा सकता है एंड इसको समराइज करना बहुत मुश्किल है, बट इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम हमने ये सोचा है कि हम तीनों सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, और ताकि ये है कि हम बहुत ज़्यादा डाइग्रेस ना करें अपनी कॉन्वर्सेशन में। So let me start by just sort of highlighting one issue which I feel was important, is the lack of penetration by spinners. ये बार बार हम कहते रहे एपिसोड्स में कि हमारे स्पिनर्स उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। पार्ट ऑफ द रीजन वाज दैट हमारे एक तो हमारा स्पेशलिस्ट स्पिनर था भी नहीं। वी वर कैरिंग Shadab Khan, who was sort of an all-rounder, so to speak, but bowling recently has not been bowling well. So if you compare our spin department to the top teams, आप इंडिया को देखें, जिस तरह कुलदीप है, या इवन जडेजा हैज बीन बॉलिंग वेल, बाकी जैम्पा फॉर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के लिए इसी तरह महाराज हैज डन वेरी वेल, शम्सी हैज डन वेल। सो आवर स्पिन डिपार्टमेंट हैड बीन वीक, और आई विश कि हमने अबरार को ट्राई किया होता। वी वर कैरिंग हिम बट ही नेवर गॉट अ चांस, सो वी डोंट नो। बट प्रॉबेबली अगर एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होता तो हमें मिडिल ओवर्स में जो प्रॉब्लम आ रही थी टू कंटेन टीम्स, वो ना होती। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग, एंड गोइंग फॉरवर्ड मेरी रिकमेंडेशन होगी दैट फॉर फ्यूचर गेम्स, स्पेशली फॉर ओडीआई क्रिकेट, हम उन स्पिनर्स को के ऊपर रिलाई करें जो हमें 10 ओवर निकाल के और विकेट टेकिंग ऑप्शन हो, ना कि रन कंटेनिंग ऑप्शन। सो ट्राई Abrar, see if you can find some other talent for our spin department, because historically we have had really good spinners like Saeed Ajmal ho gaya, even Hafiz, Shahid Afridi. So that would be my sort of one key weakness. आसिफ और मुदस्सिर, आप दोनों में से लेट्स टेक टर्न्स, कौन बात करना चाहेगा कोई की वीकनेस इसके अलावा। आई थिंक मेन तो बॉलिंग ही थी मेन, जो वीकनेस पूरे वर्ल्ड कप में। फील्डिंग में वो उसामा वाला कैच सबको याद रहेगा, मगर फील्डिंग एटलीस्ट कैचिंग वाज बेटर इन द लेटर हाफ। ग्राउंड फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, मगर कैच नहीं छोड़े। फील्ड बॉलिंग तो यार पूरी आउट थी, और थोड़ा सा प्लानिंग का भी प्रॉब्लम हुआ है, वो सिलेक्शन का भी था कि न्यू बॉल में जैसे हसन अली स्टेप्ड इन फॉर नसीम एंड ही डिड अ डिसेंट जॉब। वो कम से कम वो डिजास्टर तो नहीं करा रहा था ना रऊफ की तरह कि वो 10 रन दे रहा है। प्रॉब्लम ये हुआ कि शाहीन भी बैठ गया, कि ही डिडंट क्लियरली ही वाज नॉट फुली फिट नहीं था। अब फिजिकल फिटनेस नहीं होती यार, सैचुरेशन भी होती है। इन्होंने हमें वर्ल्ड कप से पहले ही नजर आ गया था कि वो 100 खेल रहा है। लंकन लीग फजूल टूर्नामेंट जिनकी कोई तुक ही नहीं थी वर्ल्ड कप से पहले। श्रीलंका में टेस्ट खेले, फिर लंकन लीग खेली, फिर 100, तो दे वर एग्जॉस्टेड ना, कोई क्रिकेट खेल ही नहीं सकता कंटिन्यूअसली। तो पूरी पूरी बॉलिंग बैठी है। शाहीन और फिर स्पिनर्स तो की है, स्पिनर हमारे दोनों आउट ऑफ फॉर्म है। नवाज का तो खैर पहले ही इशू, वर्ल्ड कप से पहले ही काफी लोग कह रहे थे कि नवाज को लेके नहीं जाएं। और दूसरा ये हो सकता था कि ईगो की वजह से नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। अगर ये सिर्फ
वर्ल्ड कप से पहले भी ना अगर इनको यह अकल होती कि द बेस्ट न्यू बॉलर जो है पाकिस्तान में वो इमाद वसीम है, वाइट बॉल में मोहम्मद आमिर है, शाहीन है और नसीम, ये चार थे। तो ईगो थोड़ी साइड पे करके इमाद या आमिर या दोनों भी खेल सकते थे, तो टीम को तो डेवलप। वो जो एक रीजन दिया जा रहा था कि भाई इन्होंने रिसेंटली कोई एटलीस्ट वो ओडीआई क्रिकेट में नहीं खेला हुआ, वो इतना आपके ख्याल है कि जेन्युइन नहीं है एक? वो इतना बोगस रीजन है ना। हसन को उन्होंने उसी रीजन पे एग्जाम किया है। हसन ने कौन सी वनडे खेली हुई है? जितनी हम्म। फिट है उतनी तो आमिर भी फिट ही है यार, पूरी दुनिया में खेलते हैं, और इमाद तो स्पिनर है, तो और ही इज इन गुड हम्म। फॉर्म। तो वो हम्म। सिर्फ नॉनसेंस एक्सक्यूज था। तो आई थिंक हम्म। जो मेन रीजन है पाकिस्तान जो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे ना, वो बॉलिंग है। सही और सही। वो फिर हम लग कभी बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की ना काफी पैची रही है परफॉर्मेंस। ऑस्ट्रेलिया फाइनली मेड इट। हम्म। कि थोड़ी लक होती तो साउथ अफ्रीका वाला गेम अगर जीत जाते। और फिर या हमारी गलती है कि अफगानिस्तान वाला गेम हमने किस तरह क्यों खेला, और थोड़ी फखर को थोड़ा डिले किया देखो गेम्स में, तो चलें, गलती। आपने काफी सारे जो हैं इश्यूज हाईलाइट किए हैं, बट आई थिंक वन ऑफ द की इशू यू हाईलाइटेड इज ओवरऑल हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग पेसर्स एंड नॉट द राइट सिलेक्शन यू वुड से, स्पेशली हमारी बॉलिंग के लिए। ठीक ठीक, आसिफ आप कंटिन्यू करोगे? Haji, assalamu alaikum, everybody. So I'm going to cheat a little bit in the sense that, you just said one big thing. For me, I'm going to say overall poor form. We have a lot. This is not a bad team. You look at the personnel that make up this team, you have some big names, world-class players, top-ranked batsmen, top-ranked bowlers. It's a very, very great, formidable lineup. Anybody looks at this lineup on paper, gets intimidated, and rightly so. We had so many players lose their form at the wrong time. And so, yes, you talk about fielding, the Osama catch, would that have changed things? Probably so. Bowling is the glaring thing. We all know that. But, how did we, against Afghanistan, we didn't put up a huge total. I mean, net run rate was something that hurt us in the end. We didn't put up huge totals. Babar scored well, but we didn't get that big century that we were looking for. There's so many little areas where I think just the overall form, I think it's a lot of bad luck that a lot of these good players so I'm going to differ with Mudassir a little bit here in saying that selection wasn't terrible. I mean, sure, you would want another spinner and you would want Abrar or Imad Wasim or someone like that, and if healthy, you would want Naseem in there. But I would argue or say that if you had this same team and you were going to the World Cup again, these are mostly the guys you would select, and I would back them to do well. I think they just all kind of, sometimes in tournament everything coalesces and comes together at the right time. For us, it seemed like it all kind of fell apart at the wrong time. जो I would इंडिया के लिए रिवर्स है, राइट? इंडिया हैज लाइक yeah. सारे प्लेयर्स इकट्ठे ही फॉर्म में आ गए। And we've seen Indian teams strong like this fail, so I think Yeah. it just was all the wrong things happening at the wrong time. It wasn't meant to be. But I back these guys. And so, again, going back and saying if there's one change you would make, I think obviously the glaring change is a spinner. You have to develop. Thankfully, it's not like there's nobody on the horizon. You have Imad Wasim as a veteran. You have Abrar who is there who can be tried. You have these young guys like Sufyan Muqim and things like the players who are coming up through. And I think it's time to say, for your Nawazes, for your Shadabs, maybe your time is up in this format and let's bring in some new guys because there is potential. But spinner, to talk about knowing that there's a World Cup coming up in India on these pitches and you do not have a specialist spinner in your side, this didn't hit us, but this was not something that happened all of a sudden. They could have put better planning into that. So that's one thing I would say. But otherwise, even with the team that we had, poor form, I think, is what just hurt us. अच्छा, इसमें कोई हम एक पॉजिटिव भी निकाल सकते हैं? फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला शफीक को हमने ट्राई किया, ही डिड वेरी वेल। फखर का वापस फॉर्म के अंदर आना, ऑल्दो अगेन देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट कि उसको शुरू में थोड़ा सा और ट्राई किया जा सकता था अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गर टीम्स। I उसको mean, आप but कैसे देखते हैं? and I agree, but then again, look at how miserable Fakhr's form was leading into हम्म। this. And in the first few matches, I mean, don't forget his match against Holland. I mean, he did not look good. राइट। I love Fakhr. I always said he should be in the team, but I can't argue with people who argued for who talked about dropping him. Abdullah Shafiq, we've already known, has been a great quality batsman. The fact that he's shown that class, that style, those abilities can translate into the limited format is great. Again, if you started all over and you did this whole tournament again, I think we would do better. And I think we have the right guys. Throw in a proper spinner in there.
So I just think, you know, and maybe the coaching had to do that. You know, the bowling was a problem. Morny Morkel has stepped down, rightly so, because I don't think I ever remember him standing up and doing anything for us. So, you know, yes, there are positives for sure. I'm not down in the doldrums. I'm not completely depressed because I know we have a good team. It's just things didn't, you know, click the way they should have at the right time. Right. चले अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बाबर की कैप्टनसी में के बारे में. So he's had a stint for about 3 to 4 years. He was made the captain after Sarfraz was asked to sort of step down. उसके बाद फिर जो है I think 2019 वर्ल्ड कप के बाद transition to Babar, and अब उसका ईरा खत्म हुआ है. किस तरह देखते हैं आप ओवरऑल, इफ यू बिग पिक्चर आपने देखना हो, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, ओवरऑल बिग पिक्चर क्या टेक अवे होगी? मुदस्सिर, आप बात करोगे इस पे? मेरा तो ख्याल है अगर तुम नंबर्स से देखो ना तो इट्स अ वेरी डिफरेंट पिक्चर. कि ओवरऑल उसके नंबर्स खराब बिल्कुल भी नहीं है. nobody can say he was a failure. In fact, उसका जो T20 विन रेशियो है ओवरऑल वो हाईएस्ट है अभी. आई थिंक इट्स हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. मॉर्गन और इसके बराबर है विन. ओडीआई का भी इसका 1.7 है विन रेशियो, और पाकिस्तान नंबर 1 था वर्ल्ड कप से पहले. टेस्ट का बड़ा इंटरेस्टिंग है. 20 टेस्ट में he won 10 and lost 6 games. रियलिटी ये है कि they had a wide and Australia जीत के चली गई. So the worst performance we have is the home test games. That was, and again we are a team, वो भी selection में bowling के बगैर खेल रहे थे हम. वो selection इतनी खराब थी कि कोई और भी कैप्टन होता वो प्रॉब्लम होनी थी. तो टेस्ट में इतनी अच्छी नहीं है. अगेन पेपर में डिसीविंग है. दो वाइट वॉश वाज रियली बैड. वाइट बॉल में ओवरऑल अगर तुम याद करो व्हेन ही स्टार्टेड T20 वर्ल्ड कप इन 22, टीम अच्छी जबरदस्त खेल रही थी यार. इट वाज वन ऑफ द फेवरेट. इंडिया को जो हराया था, आई थिंक दैट वाज बाबर्स पीक. 150 for 0. वो तो मेमोरेबल है. ही वाज द फर्स्ट कैप्टन टू बीट इंडिया इन वर्ल्ड कप. अब वो कहते हैं कि ओडीआई में नहीं हराया, पहले बोलते थे कि दोनों में नहीं हराया पाकिस्तान में. खैर, द फर्स्ट कैप्टन टू बीट इंडिया इन द वर्ल्ड कप. फिर इंडिया फिर दूसरे वर्ल्ड कप में वी मेड टू द फाइनल. तो वहां तक सब सही जा रहा था. प्रॉब्लम स्टार्ट हुई इस साल जो, और एशिया कप में भी इंडिया फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका खेले थे. प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है इस साल जब ये वर्ल्ड एशिया कप में जिस तरह टीम बैठी है ना, वो दैट वाज अगेन आसिफ भाई इज राइट. आई थिंक टीम वाज सैचुरेटेड. मेरा कोई फिट, और वो जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया जो इंडिया ने नहीं किया ना, इंडिया वाज डूइंग ओवर रोटेशन, तो हारे जा रहे थे. हमने तो रोटेट ही नहीं किए प्लेयर एंड में ना. वही प्लेयर्स हमारे थक गए उसके बाद, और इंजरीज. वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं थी फास्ट बॉलर्स की. शाहीन का तो मुझे पता था कि सब जब लंकन लीग में लग रहा था कि वो इज गोना वही हुआ है. फिर इवन तो बस यही था कि एशिया कप तक वाइट बॉल में बाबर वाज डूइंग फाइन, मगर फिर एशिया कप में बैठी है टीम और वर्ल्ड कप में. तो ओवरऑल इट्स अ मिक्स. ही इज नॉट अ फेलियर एट ऑल आई थिंक. अच्छा, इसमें एक बिग पिक्चर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हाउ डू वी गेज sort of the strength or the effectiveness of captaincy? What's the metric जिसमें हम एक कैप्टन को, आपने बात की कि जी ओवरऑल नंबर्स, तो ये नंबर्स तो हमारी टीम की परफॉर्मेंस की है, राइट? सो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, फॉर एग्जांपल द अर्ली 2000s पॉन्टिंग का ईरा, सो वुड वी कंट्रीब्यूट दैट, वुड वी एट्रीब्यूट दैट टू पॉन्टिंग्स कैप्टनसी, या वो प्लेयर्स ही इतने अच्छे थे कि कोई और भी कैप्टन बन जाता तो मोस्ट लाइकली दे वुड हैव वन, राइट? सो इसके अंदर क्या हम, जो आप ये सक्सेसेस बता रहे हैं, इज इट प्राइमरली बिकॉज ऑफ हिज एस्ट्यूट कैप्टनसी स्किल, या उस वक्त हमारी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी? यार आसिफ या मुदस्सिर, आप कंटिन्यू करें. वो चक्कर ये कि यू आर राइट कि टीम कभी इतनी अच्छी हो जाती है कि कैप्टनसी का, जैसे पॉन्टिंग वाली टीम वाज रियली गुड. बाबर की है कि यार नई टीम थी, तो जो उसकी स्ट्रेंथ है ना वही उसकी वीकनेस है. कि जो यूनिटी थी ना वो टीम की स्ट्रेंथ थी. नहीं थी. दे वर फोकस. और जितना पोटेंशियल है ना वो खेल रहे थे. अगर कोई लिमिटेशंस भी थी ना तो एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू गिव इट देयर 100%. यूनिटी थी. दे वर क्लीन क्रिकेटर्स. दे वर डूइंग वेल. अब नेगेटिव भी यही है कि किसी और को घुसने नहीं दिया, रोटेट नहीं किया, वो सारे बर्न आउट हो गए और कुछ एक्सपोज हो गए. जैसे नवाज इज अ बिग एग्जांपल. ही वाज ओके. अगेन ही इज पोलराइजिंग क्रिकेटर.
he has some good performances. तो बाबर की दूसरी स्टैंड ये थी कि he was a very strong captain. वो जो शान को वाइस कैप्टन बनाया उसने उसे बेंच पे बिठा दिया. तो and I'm with बाबर. अगर बाबर को रन भी सही मिला 4 साल का, और I am with that कि जो कैप्टन है he's responsible, he should be able to pick his team. और अगर वर्ल्ड कप में पहुंच जाते सेमीफाइनल तक तो बाबर वुड हैव स्टेड. तो इसलिए मिक्स है बाबर की. आई थिंक ही डिड वेल विद हिज लिमिटेड रिसोर्सेज. प्रॉब्लम ये हुई कि सब हम बेवकूफ नहीं है, पाकिस्तानी फैंस भी स्मार्ट हैं, हम बेवकूफ नहीं है कि हमें नजर. जो प्रॉब्लम ये हुई है कि ही वाज बहुत स्टबर्न था, कि उसने ही वाज इनफ्लेक्सिबल एंड ही डिडंट अडैप्टेड क्विक इनफ, रोटेट नहीं किया प्लेयर्स को, और aggressive थोड़ी और हो सकती थी overall. I think Asif is itching to say something. No, I'm just look to sort of answer your question. Look, it is very, very subjective. When we were doing well a year ago in the T20 World Cup, I know I definitely said, and you guys said as well, that we were doing well despite his captaincy, not because of it. Look, Babar, take a step back first. Babar is, when all is said and done, he may be the greatest batsman Pakistan has ever had. All love to him, and I think a lot of credit goes to him for having the grace to step down and not being kicked out. In the history of Pakistan cricket, how often has that happened? Very, very rarely. So, all love to him. And I think, again, you could see the burden of captaincy on him. He was not enjoying his cricket. And when you have a batsman of his talent, a generational cricketer who could end up being the best batsman in the history of Pakistan cricket, you want him to be the best version of himself that he can be. And so if freeing him from the burden of captaincy allows him to do that, then absolutely do that. Sachin Tendulkar is another example like that. Virat Kohli, Bilkul. So, but we all know, and, let's not pretend we weren't saying. We've all been saying tactically he was not a good captain throughout, and that's okay. He's a great batsman. That doesn't mean you have to be a good captain. I think if you want to take one thing about him that, we all noticed that was a constant thread throughout, is his inability to learn or adapt, that he would make the same mistakes again and again and again. The killer instinct. You have in the Asia Cup final last year, Sri Lanka 59 for 5, and you bring in part-timers instead of going for the kill. You had against India in the Asia Cup this year, you had them 66 for 4, and then you just spread the field out and let the guys get settled. In the match, I think against South Africa, when you're trying to get the tail enders out, you don't have a slip in, the catch goes to first slip, then you chase the field and you put वो जो श्रीलंका का जो एशिया कप का जो गेम थी जिसके अंदर वो so many examples of that. But again, this is not a time you can pick and choose and all that stuff. Babar is a great player for Pakistan. We love him, and I'm going to close the Babar part by saying what I think was the greatest thing about his captaincy is that he put himself out there. He put himself at number 3, and as an opener, he in T20 he went to open. There are a lot of captains. I'm a big fan of Inzamam ul Haq as a captain, but he would hide himself down at 3 down, 4 down, 5 down. Misbah was a great test captain. He would come lower down. Contrast that. Even Sarfraz was coming 5 down, 6 down. Contrast that with the 92 World Cup. Whatever you say about his politics, Imran Khan came up to number. He saw we were struggling. He said, I'm going to come up to number 3. I'm going to lead this team from the front. And Babar was never afraid to be on the front, the firing line, and say, number 3, we're in trouble. I'm going to be there. I'm going to take care of it. That takes a lot of courage, and that's not something you see in Pakistan captains in the past, that he is willing to stand there and be on the front lines. So that I have great admiration for that, and I wish Babar the best of luck in future. He's going to get support, and this is going to allow him. This is what makes him be the best version of Babar that he can be. This is a great move. So I'm happy. Right. I totally agree with you that hopefully this kind of frees him up, because we do want fit mentally and motivated Babar as a batsman, because obviously he's our best batsman right now, and jitne bhi records hain, and who knows, I mean, the debate whether he's our number 1 ever will be once and for all by the time he's done, wo khatam kar de. New captains के बारे में क्या राय है आपकी? So Shaheen for white ball and Shan for test. White ball में तो हमारे realistically speaking the 2 or 3 candidates were Shaheen, शादाब एंड रिजवान. उसमें तो शादाब की तो चूंकि परफॉर्मेंस आपने देख ही ली थी वर्ल्ड कप में, तो उसकी तो टीम में जगह बड़ी डाउटफुल थी. फिर आपका रिजवान वर्सेस शाहीन की डिबेट चल रही थी. A lot of people were surprised. They thought Rizwan might have been a better candidate. थोड़ा सा सीनियर भी है, maybe to some people a bit more mature mentally, emotionally.
At the same time, Shaheen has won 2 PSLs, so he seems to be an aggressive captain. क्या देखेंगे इसको आप ओवरऑल, मुदस्सिर? यार मिस हैंडल किया है ये थोड़ा। वर्ल्ड कप से पहले जब एशिया कप में प्रॉब्लम हुई है, एक टीम 4 साल से खेल रही है, जैसे भी ना हो यूर कमिटेड, यूर लॉक्ड इन। वर्ल्ड कप से पहले उसको बुला रहे हैं उसके सामने, कमेटी के सामने, और वो दैट वाज नॉट अ गुड मीटिंग। वो नजर आ रहा था कि देयर वाज सम काइंड ऑफ प्रेशर बीइंग पुट ऑन हिम। शुरू के 4 मैच हुए हैं, साउथ अफ्रीका वाला गेम बाकी था, अफगानिस्तान वाला गेम बाकी था, यहाँ पे वो इंडिया वाले गेम में फिर वो चेयरमैन आ गया, अजीब स्टेटमेंट शुरू कर दी। अभी वर्ल्ड कप में भी आधे मैचेस पड़े थे और यहाँ पे टीवी पे बैठे लोग किसको चेंज करो, और लोगों ने हंगामा मचाया हुआ था। तो नेक्स्ट सेटअप दिस वर्ल्ड कप में इट वाज आउट। नहीं, प्रोसेस तो जो बिल्कुल हैंडल नहीं हुआ था, बट अब चलें, जो भी प्रोसेस था, अब ये डिसीजन हो गई है, तो अब किस तरह देखते हैं? अभी बाबर की जो प्रॉब्लम है ये तो हमें शुरू से ही पता है, तो इज इट द राइट टाइम टू डू ऑल दिस? आपके पास बैकअप क्या है? शाहीन की तो फिट ही नहीं है, वो खेले। अभी मैं देख रहा था वर्ल्ड कप जून में, वर्ल्ड कप से 6 महीने में पीएसएल है पूरा, तो शाहीन ने साइन अप किया हुआ है एमिरेट्स लीग, 5 टेस्ट है, वो खेल ही नहीं सकता इतने गेम, तो उस कैप्टनसी कौन करेगा T20 में? तो शाहीन तो इज टोटली रॉन्ग चॉइस, आई डिसएग्री कंप्लीटली। पहले तो आप ये कैप्टन आप उसको बनाते हो जो पहले गेम तो खेले सारे। बाबर की स्ट्रेंथ ये थी कि ही वाज योर बेस्ट प्लेयर एंड ही वाज प्लेइंग ऑल 3 फॉर्मेट्स। इन्होंने दिस इज अ रैश डिसीजन, बेवकूफों की तरह इन्होंने हरकत की है। Do you think Babar should have stayed captain? नहीं, वो चेंज करें, मगर एक तरीका होता है। आपने वो कैप्टन अनाउंस कर दिया जो जो खेल ही नहीं सकते गेम सारे। तो आप क्या रिजवान को रिकमेंड कर, अगर आप होते तो किसको कहते हैं आप रिकमेंड करते? देयर इज नो ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है रिजवान का प्रॉब्लम ये है, अगर आप आई एम विद अ डिफरेंट कंप्लीटली डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। रिजवान इज गुड, मगर आई डोंट सी रिजवान लॉन्ग टर्म इन T20, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। अभी तो ठीक है, चलो रिजवान को बनाए थे एटलीस्ट। Yeah. If Babar steps down, then who is your captain? एक और प्रॉब्लम ये था कि रिजवान बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। रिजवान बाबर की थॉट प्रोसेस इज एग्जैक्ट सेम। अगर बाबर पे लोगों को एतराज है ना, तो आई ब्लेम रिजवान, सेम गिल्टी, दे वर बोथ टुगेदर इन एवरीथिंग, साथ ओपन करेंगे। तो रिजवान का ये प्रॉब्लम है, इफ ही unless we think he will make like a drastic changes to the strategy, तो रिजवान ही बनता था। मुझे शाहीन का नहीं समझ आ रहा, आई डोंट थिंक ही इज इवन फिट टू बी अ कैप्टन। आई थिंक इट्स अ रैश डिसीजन। फिट एज इन फिजिकली फिट आप बात कर रहे हैं, मेंटली फिट बात कर? फिट मेंटली, नो मेंटली ही इज नेवर फिट, और फिजिकली तो वो है ही नहीं। तो अच्छा विद शाहीन या बोलो, अच्छा, तो वो जो 2 PSL जीता है वो आपके लिए कोई खास मैटर नहीं करता? तो टीम इतनी अच्छी थी, फखर उसमें रन करता है, राशिद खान बॉलिंग करता है। इसका वही है कि they won despite him, not because of him. Is that अच्छा what you're saying? Yeah, so हाँ, is a very choice actually. मैं I'm right disagree with it. I would have, चलें, चलो मैं फिर भी मान लेता, शाहीन को मैं नहीं मान सकता इस वक्त। He's not. ओके। टेस्ट में भी वही है, शान अगर Oh, आपका we're still talking about what चलें, limited. इसको पहले खत्म कर लेते हैं डिबेट को, हाँ. फिर शान पे आते हैं। आसिफ, आप क्या कहोगे शाहीन? I actually think that Rizwan would have been a better choice. You know, TK, I understand what Mudassir is saying. He has the same mindset as Babar in the sense that he wants to open T20s, but he has been a captain before. He has shown that he plays better with more responsibility as a captain, and he's been more attacking. He's been tactically much better, I think. He doesn't miss those tricks in the field placings and the bowling assignments the way Babar has. So ये आप क्या शाहीन की बात करें या नहीं, रिजवान की बात? मैं रिजवान की बात कर रहा हूँ, रिजवान की बात करें। So Shaheen का ये है कि, you know, ठीक है, I see what you're saying about the PSL. I think he's very young, number one. Even in the PSL, we saw a little immaturity, the way he reviews, very bad at reviewing. He gets a little emotional with that. And you know, his time will come. And what Mudassir is saying is true, is that to be a captain, number one is you need to be fit enough to be there all the time. And fitness is an issue with him. So if he's going to be captain, they really need to manage his matches and what he's playing and not playing. I think, you know, look, on one hand, you can say it's okay, he's young, he'll learn as he goes along. But remember, in T20, we're 1 year removed from being in the finals of the tournament. We're not a team that is looking to grow and learn. You know, we're a team that is going into that tournament as one of the favorites. So I think that's something that needs to be brought in mind. He's not my first choice. He's not even my second choice. But
I guess we'll just see how things go. I would definitely have chosen Rizwan, and I think Shaheen knows that, and he's going to lean on Rizwan a lot anyway, so that's fine. But I think he's a little immature for it. One thing I will say, a good thing is, as captain of PSL, his batting was a lot better, and like I said about Babar, he wants to be there to win the match for you, so he will elevate himself. And so that's the kind of thing that you see. He doesn't shy away from it. He takes it on, and he's aggressive. I like that. And so I think in a few years he'll be there. Should we have him learn on the job, or should we have him be a vice captain and learn under someone and then gain that experience? I think you could say probably the latter, but we are where we are. Neither of these choices were great, but that's what it is. चलें, मैं भी एक क्विक अपनी टेक अवे इस पे देता हूं, then we'll talk about एक पॉइंट जी बोल के अब वो हमारा बैकअप फ्लॉप हो गया ना, हालांकि शादाब फ्लॉप हुआ है ओडीआई में। इसका कैप्टन वो कोई वाइस कैप्टन है हमारा T20 में? कौन है वाइस कैप्टन? शादाब ही है। शादाब था। हाँ, तो अगर वो परफॉर्म कर रहा होता तो ही वुड हैव बीन अ गुड चॉइस। तो हुआ है कि आपका वाइस कैप्टन जो है कि वो आउट ऑफ फॉर्म हो गया, तो इसकी वजह से वैक्यूम अचानक हो गया। उसकी टीम में अपनी पोजीशन का भी पता नहीं है ना कि इज ही स्टेइंग और नॉट। अरे एक बात, T20 इज अ डिफरेंट फॉर्मेट, ही माइट बी हाँ, T20 में तो ही इज मच मोर सक्सेसफुल, का 4 ओवर निकालने होते हैं, उसमें ऑलराउंडर्स की ज्यादा वैल्यू होती है। अच्छा, इसमें मैं एग्री करूंगा आपके साथ, मेरी भी फर्स्ट चॉइस रिजवान ही होती, बट आई एम अ लिटिल बिट मोर ऑप्टिमिस्टिक फॉर शाहीन। yes, I do agree, थोड़ा सा young है, at times he seems a bit more immature, emotional, but at the same time he seems aggressive. He seems, जो आप आसिफ बात कर रहे थे कि does the captain put himself up front, तो वो हमने एविडेंस देखा है PSL में शाहीन के लिए। फॉर एग्जांपल, आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, जो फाइनल था उसके अंदर लाहौर के अंदर एट वन स्टेज लग रहा था कि शायद 160 भी मुश्किल से 170 या इतना करेंगे, and he promoted himself ahead of David Wiese, and he scored almost a half century at about 180 strike rate or so, and completely changed the game. So वो मुझे चीज अच्छी लगती है कि जो भी हमारा कैप्टन हो थोड़ा सा अग्रेसिव, मॉडर्न डे क्रिकेट खेले। सो और दूसरी चीज ये है कि एक चीज अच्छी जो मुझे लगी है, आई एग्री विद मुदस्सिर के वो हैंडल सही नहीं किया गया जिस तरह while the team was there, जो बातें स्टार्ट हो गई थी। लेकिन फिर भी ये चीज मुझे अच्छी लगी है कि अगर आपने कैप्टन चेंज करना है T20 का, तो आप इंतजार ना करें 3 महीने बिफोर द वर्ल्ड कप। फिर वही होता है कि यार वही है, आप बहुत देर हो गई है। तो वी हैव स्टिल अबाउट 8-9 months. This is enough time to sort of groom a young guy. तो let's see how it pans out. शान के बारे में क्या कहेंगे? शान ज्यादा मेरा ख्याल है उसके अंदर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई है, बिकॉज सम पीपल थिंक के शायद उसकी शायद जगह नहीं बनती टेस्ट के अंदर। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। शान बेचारे को पहले परमानेंट मेंबर तो होता टीम का वो। दिस इज सच अ, इससे ना होगा ये कि ट्रोलिंग होगी इंटरनेट पे। अब पहले इमाम को पर्ची बोलते थे, अब हालांकि शान 10 साल पुराना प्लेयर है। हम लोग कल ही देख रहे थे, he was under 19 vice captain of Imad Wasim in 2000 I think 8 with कोहली इंडिया से खेल रहा था, और शान, और वो एक्सीलेंट रिकॉर्ड है। मेरा हमेशा से प्रॉब्लम ये है कि शान को कंसिस्टेंट रन क्यों नहीं दिया किसी भी फॉर्मेट में। अगर आप पूरी वर्ल्ड कप में ना, इन्होंने 9 ODI खेले हैं, शान ने कोई कभी 9 मैच दिए ही नहीं किसी ने। टेस्ट का भी यही है। तो शान has missed 4 years back। जिस तरह इमाम की एवरेज और शान की एवरेज बराबर थी एक वक्त में 20 ईच, ठीक है, बजाय शान को खिलाने के ये ले आए थे इमाम को। इमाम had 0 centuries, शान had 4 centuries, 4 outside पाकिस्तान, 1 in England और 2 in श्रीलंका। खैर, अब कैप्टन बनाना इज टोटली रॉन्ग। पहले अब जगह का प्रॉब्लम है, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को घुसेड़ दिया इन्होंने शान के बजाय। तो शान को तो उन्होंने पहले ही 4 साल पहले ही मिस द बोट, और अब उसे जबरदस्ती घुसा रहे हैं। तो इट विल बी, अब मुझे नहीं पता वो डालेंगे किस तरह टीम से। आई थिंक इट्स अनफेयर टू मेक शान कैप्टन एट दिस। बाबर को उन्होंने कहा था कि कंटिन्यू टेस्ट, ही रिफ्यूज। ये लोगों को पता नहीं है पाकिस्तान में ज्यादा। आपको कोई इनसाइडर नॉलेज है इसमें? आपको कैसे? It's in the article। लोग फाइन प्रिंट नहीं पढ़ते ना, आई थिंक। अच्छा, इंग्लिश में लिखा हुआ है ESPN में। अच्छा, इंग्लिश ज्यादा लोगों को नहीं आती। Yeah, So Sean could read it then, at least. yeah.
So he was offered कि यार continue test. He said no. He resigned. They were putting pressure to resign in white ball. एंड स्टीफन जी सही और फिर हुआ ये मेरे ख्याल से कि ऑस्ट्रेलिया आ रहा था. Nobody wants to be a captain. मैंने कहा चलो भाई शान को बना. अब देखो क्या होता है. नहीं वो तो जो भी कैप्टन बनेगा तो इट्स गोना बी अ चैलेंजिंग सीरीज एनीवे आसिफ आप किस तरह देखते हैं कुछ पॉजिटिव्स हैं आई मीन he does seem to be a guy who's sort of very eloquent he does seem to have a good cricketing brain जब उसको इंटरव्यूज देखते हो तो he speaks the right stuff right like, from a cricket analytics perspective Yeah, I mean, so do we, I think. So, but I mean, yeah. No, look, before we started this whole thing, I remember I said the two things that are important to me are the World Cup and the Australia series. The Australia Test series, honestly, is more important to me because we've never, ever, ever come close to winning that. And I will start positive, like you said. He is not just eloquent. Eloquent to TK fine. He speaks good English, which is, I guarantee, and I've been saying this, the number one criteria. The PCB has been trying for so long to put him as captain. This was their perfect bahana and they did it. यार हम भी कुछ क्रिकेट खेल लेते थोड़ा बहुत तो शायद हमें भी कंसिडरेशन मिल जाती I'm sure I could be the captain based on that qualification as well. But yeah, he does, it's not just that he speaks, you can tell he has a very good analytical brain. He has a very good cricketing mind, which again makes me think he would be a great coach or a commentator. He's a very inspiring fielder, a very good fielder as well. So those are the positives. And look, again, I say these things wishing him the best of luck. I'm a Pakistan fan. I want him to do great. I want him to succeed. Here's the thing. He has played, I know Mudassar was saying he didn't get a run here and there. He's played 30 test matches and his average is 28. And I did not get to look at this, but I don't know if in the history of Pakistan cricket, we have ever had a batsman captain with a test average that low. I mean, it's just, how do you command respect from players around you when you are actually taking the place of a batsman who is better than you? In this case, I think it's going to be Imam ul-Haq. So that's one thing. And again, captaincy means responsibility. And you all know, I said this against in the home England series, when there were multiple videos out there of him reverse sweeping in the nets and missing it every single time. And then you go and do that in the tests and you miss it again. To me, that's a deal breaker right there. When we were trying to save the test match against England and you come down the wicket and get stumped, but maybe captaincy will add that level of responsibility with him. I wish him the best. It's going to be tough. He is nowhere near my top 15 choices for captain, but at least he'll speak well. At least he'll be a good ambassador for Pakistan cricket. Maybe that's the best we can get out of a tour. इसमें क्या आप लोग क्या recommend करते हैं कि अगर बाबर stepping down क्या रिजवान को आप करते हैं या कुछ लोग कह रहे हैं सरफराज को आप couple of years का stint दे सकते थे देखो सरफराज का जो मुश्किल है एग्री हूँ सरफराज को मैं भी इसलिए सोच रहा था क्योंकि रिजवान हिमसेल्फ ब्रॉड रिमेंबर के जब पाकिस्तान दो सीरीज हारा था तो रिजवान टुक अ ब्रेक एंड लेट सरफराज प्ले अगेन न्यूजीलैंड सरफराज को बनाते भी तो यार उसकी एज हो गई है वो एड हॉक ही बनता ना अंटिल वी फाइन मेरा प्रॉब्लम ये था शान तो टीम का मेंबर ही है तो हाउ यू कैन मेक हिम अ कैप्टन तो या तो रिजवान से को बनाते रिजवान को नहीं सॉरी बाबर कुड हैव कंटिन्यूड बट ही रिफ्यूज इसमें ये कि आई स्टिल हैव अ होप एक वे आउट है जो मुश्किल है टेक्निकली शान इज गुड अगर समहाउ he manages some decent score in Australia तो he has to score some runs to otherwise बहुत मजाक उड़ेगा शान का यार. So one encouraging thing is he did have, I don't know how many years ago it was, a very series in South Africa, test series, where he was aggressive and he played well. He is very suspect outside the off stump. Just ask Jimmy Anderson and he'll tell you. And in those conditions, so if he can be aggressive, I think he'll do well. But coming back to what Simon was saying is that Rizwan, the problem with Rizwan is he's a wicketkeeper, he's a batsman, captaincy, it's a lot of burden to take. I'm going to throw a complete out of left field. Imam, Imam has been groomed as a good, cricket. Thought as a test captain, because who else has been there who's experienced and has a guaranteed spot in the test team? Imam is a thought I would have had as well, but of course that's not happening. So whatever, he's not even going to be in the test 11 because Kaptan Saab needs to get a place. चलें जी इसके साथ ही जो लास्ट हमारा एजेंडा है पॉइंट है which is the India versus Australia final किस तरह देख रहे हैं India has been steamrolling the opponents not only winning but dominating कभी वो 50 पे ऑल आउट कर देते हैं श्रीलंका को कभी 200 रन से 230 रन से हरा देते हैं साउथ अफ्रीका को
So does Australia stand a chance? Yeah, do you think it's destiny waiting for India to regain their title, which last time they won again on home soil in 2011? क्या कहेंगे? यार क्वालिटी तो है ऑस्ट्रेलिया में, उनकी भी ना आउट ऑफ फॉर्म है कुछ लोग, तो इफ यू टॉप 3 आर वेरी डेंजरस. ये ट्रेविस हेड आए इंजरी के बाद, एंड आई दे बिकॉज ऑफ ट्रेविस हेड टुडे, क्योंकि उसने जो वो और शर्मा की स्टाइल से खेल रहे हैं, दे डोंट केयर, दे गो आउट एंड दे स्कोर. ट्रेविस हेड एंड वार्नर स्कोर लाइक 115 अगर वो दे स्टे. मिच मार्श आल्सो प्लेइंग रियली गुड. प्रॉब्लम हो रहा है इनको स्टीव स्मिथ एंड लेबुशैंग, व्हिच आई थिंक इज अ बैड कॉम्बिनेशन. वन ऑफ देम प्लेड. अब दोनों ही पता नहीं क्या वो मजाक कर रहे हैं. तो the top 3 has to score. I think Australia can give them a tough time. Ahmedabad में है. I think it's a decent pitch. 400 की pitch नहीं है. वो तो खैर स्पिन पिच खिलाएंगे, आई थिंक, नोइंग इंडिया और नोइंग के वो चीज, तो वो जैसा न्यूजीलैंड के गेम के अंदर भी आपको पता ही है, पिच चेंज हो गई थी. They're going to have a spin-friendly pitch, used pitch. हाँ, मगर मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलिया शुड बैट फर्स्ट, और अगर स्कोर कर देते हैं अच्छा तो दे हैव गुड बॉलिंग. स्पिन विकेट अगर बन गई बिल्कुल ही खड्डा तो आई डोंट नो, मगर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया हैज अ चांस. यू कैन नॉट राइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. इंडिया ऑफ कोर्स द फेवरेट. ऑस्ट्रेलिया को I think Indian fans would have been hoping for South Africa, right? Because I think इन दोनों में से Australia seems to be one team जो can give them a tough time. Asif? Yeah, I mean, the South Africa of earlier in the World Cup was absolutely dominating. They peaked way too early and then fizzled out. Speaking in very general terms, first of all, I think you have to say, you have to give kudos to India. They have dominated completely on every aspect of the game. And, you know, people say, yes, they are in charge of the ICC. They run the finances. Everything is lined up for them. That's there. But then you have these conspiracies about DRS and changing the balls for their bowlers, about the toss, Rohit Sharma throwing it far away. I think that's the silliest, because honestly, India, whether they're chasing or whether they're defending, they look unstoppable. So you got to give them kudos, because we've not seen this level of dominance in the World Cup since Australia some years ago, and in the West Indies in the late 70s. So credit goes to them. One thing which I think gives Australia, because I do think these are the two best teams right now, and a little edge, is that India has not faced any adversity at all in this tournament. Not at all. I mean, the closest I see is when Australia had them, 20 for 3 or something, or when Pakistan, funny enough, was playing against them and we were about 158 for 2. There was a little, but Australia has been to the, they've been absolutely to the bottom of the barrel, and they've figured out a way. They've clawed their way to come back. Number 10 थे वो, number 10 से वो final पे पहुंचे. Yeah, बिल्कुल. And not, I mean, again, the Maxwell innings, you see even the semi-final against South Africa, they have faced adversity head on, and they have overcome it. So the one thing that I think, because all the pressure in the world is on India, but that hasn't stopped them. They've been unflappable thus far. But I do think that if there's a little crack, a little chink in their armor, how do you respond in a World Cup final at home in front of 130,000 fans when you have the relentless, experienced champion Australians on the other side? I actually am going to go out on a limb and say that I think Australia is going to take it. चलें देखते हैं इसमें जो आप बात करें, और मैं उसको सेकंड करूंगा अबाउट इंडिया नॉट फेसिंग एडवर्सिटी. एक छोटा सा मोमेंट हमने देखा था सेमीफाइनल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, कि जब एक लंबी पार्टनरशिप लगी थी विलियमसन की और मिचेल की, और उसमें कैच ड्रॉप हो गया था, शमी ने कैच ड्रॉप कर दिया था, तो वो बिल्कुल क्राउड स्टन हो गया था. और अब उनको लग रहा था कि यार दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि यार अब हम क्या करें. तो वो एक थोड़ी सी पैनिक सेट इन कर गई थी. तो देन दे रिकवर्ड लेटर ऑन. तो आपकी बात सही है कि अभी तक उनको कोई इस तरह के मोमेंट्स नहीं निकले हुए. दे रियली हैव टू फाइट, एंड whereas ऑस्ट्रेलिया उनको हर तरीके की वो चीज देख चुके हैं. एंड अगेन ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, फाइनल्स के अंदर बहुत खेल चुके हैं, वो बहुत दफा जीत चुके हैं. सो I would still give a little bit of an edge to India because of the way that they've been playing, home advantage. एक चीज जो मैं नोट करूंगा कि जब पांड्या जो है he was injured, तो उसकी वजह से अब they are just relying on 5 specialist bowlers. They don't have a backup bowler essentially. अभी तक all 5 bowlers have been doing wonderfully well. I mean, बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन किसी एक बॉलर का भी कोई ऑफ डे हो सकता है या इंजरी हो सकती है. तो अगर इस तरह की सिचुएशन के अंदर अगर कोई बनती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया को काफी फायदा होगा. बट अगेन इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. दैट्स वन थिंग टू सॉर्ट ऑफ वॉच आउट फॉर.
मुदस्सिर, आप कुछ ऐड करोगे इसमें डिस्कशन में बिफोर वी रैप अप? नहीं, again, India are the favorites, of course. मगर ये कि if you ask me, I think it's 60-40, like 60 India, 40 Australia. आई थिंक जो बेटिंग मार्केट है वो भी तकरीबन आसपास यही बता रही है, 60-40 मेरा ख्याल है। Wasp score. Wasp. चलें देखते हैं जी। But you're right. I mean, these were the two top teams based on evidence. India, of course, dominating performance. Not lost a single game. Lost तो छोड़ ही दें आपने, वो तो करीब भी कोई किसी एक गेम में नहीं किसी को आने दिया। And Australia again, the tenacity that they showed, जब वो first two games आपको याद होगा हार गए थे against India and then against South Africa first. दो गेम्स हारने के बाद people had started writing them off, but जिस तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेन को वापस लेकर आए हैं, I think they're also peaking at the right time. So it's going to be a good final, and of course, may the best team win. Well, चलें जी, इसके साथ ही आपसे जाना not the चाहेंगे। best team. Let Australia win. Thank you. थोड़ा डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना पड़ता है, आपको पता ही I'm not going to be. I'm sorry. India, I give you credit for being great, but I mean, I don't want you to win. I'm sorry. Yeah. चले जी, इसके साथ ही जाना चाहेंगे। होप आपको पसंद आया हो हमारा एपिसोड। कीप सपोर्टिंग अस। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन दैट ऑलरेडी। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.